जी स्टार्ट करें सर। ओके सर। Good evening, all the members. I welcome all of you on this webinar on valuation organized by Jalandhar branch of NIRC of ICI. We appreciate the participants who have made great efforts to attend the program in this festival season also to learn something new. Today, CA Pitam Goel ji is with us to guide us about valuation, and this is new area for us. So we are thankful to him for accepting our request and giving his time. So first of all, I will invite our chairman CA Piyush Bansal ji to address the members. Thank you very much, Shaji. At the onset, I would like to welcome and recognize the presence of our guest speaker of the day, CA Pitam Goel ji, as well as CA Ankit Sharma ji, who is also a senior consultant of GBTP and company. Welcome you both to this event of Jalandhar branch, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Pitam ji and Ankit ji are going to guide us on valuation under different statutes. मेरी इनके साथ बात हुई थी कि ये इवेंट जो हम वेबिनार प्लान कर रहे हैं कि ये क्या वैल्यूएशन होगी, ये क्या वैल्यूएशन कोर्स वाला सिस्टम है या इनकम टैक्स में कोई वैल्यूएशन यूज होती है वो है. देन ही क्लैरिफाइड इट दैट इट वुड बी वैल्यूएशंस अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट्स. अलग-अलग जगह पे कहां-कहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है और कैसे-कैसे वैल्यूएशन का सिस्टम रहेगा, वो सारा इलस्ट्रेशन और केस स्टडीज के बेस पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये बताएंगे. So it is going to be very much useful to all of us. Thank you very much for sparing your valuable time, Pitam ji and Ankit ji. I would also like to welcome our executive committee members, CA Shashi Bhujan ji, Secretary, CA Gurleen Singh Sani ji, Cashier, CA Sonia, Vice Chairperson, CA Umesh Dada, Immediate Past Chairman, CA Sumit, and CA Vinay Jindal, Executive Committee members. I also welcome and recognize the presence of Ashni Jindal ji, Past Chairman. I can also see SS Kalra ji is there. Welcome you, sir. Other members who have joined, I welcome you all. Members, this is the festival season going on. अभी हमने करवा चौथ celebrate किया है, and soon we will have a special event for Diwali in consultation with the executive committee member. We will plan that. Along with that, I would like to inform you about the recent development in branch building. हमारे पास एक लेटर आई है जिसमें हमें 44 लाख की नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस के लिए कहा गया है कि वो चार्जेस पे किए जाएं. हमने उसकी वेबर के लिए रिप्रेजेंटेशन दी है. ऑल्सो वी हैव कंसल्टेड विद पास्ट चेयरमैन जो उस टाइम पे चेयरमैन थे जब 2015 ऑनवर्ड जब लैंड ली गई थी. हमने उनके साथ भी ये वर्किंग की है, उनकी गाइडलाइंस ली है कि कैसे किया जा सकता है. एट द सेम टाइम वी आर यूजिंग पॉलिटिकल अप्रोच ऑल्सो. We are using political approach also and we are using bureaucratic approach also. तो जहाँ तक पॉसिबल है हम वो कोशिश कर रहे हैं कि ये वेव ऑफ हो जाए. इंस्टीट्यूट में भी हमने इसको इन्फॉर्म किया है और उनसे भी गाइडलाइंस मांगी है कि हमें बताया जाए कि कैसे किया जाएगा. इसके लिए पूरी डिटेल में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के चेयरमैन हैं नंदा जी, सीए चरणजोत सिंह नंदा जी, उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई है. ही इज वेरी मच सपोर्टिव एंड ही और वो यहाँ तक रेडी है कि अगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जाके किसी को मिलना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है तो मैं पर्सनली दिल्ली से आ जाऊंगा. ही इज रेडी टू दैट एक्सटेंट ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच नंदा जी फॉर योर सपोर्ट. एंड मेंबर जैसे डिटेल आगे बढ़ती जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे. थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस webinar on valuation under different statutes. Over to Shashi. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks to Piyush sir. This is first program of our guest speaker CA Pitam Goel ji. So in Jalandhar it is first program. So I invite our treasurer CA Gurleen Singh Sani to introduce our worthy speaker. Good evening, everyone. Thank you so much, Shashi ji. I welcome all the members to this webinar on such a fresh topic, valuation. So I'm honored that I have been given a chance to introduce CA Pitam Goel ji.
CA Pitam Goel ji has he has been a chartered accountant and having all India merit position at all the stages of ICAI. He has been a registered valuer under IBBI. He has done diploma in DISA, forensic and NDS. He has over 10 years of professional experience in the field of valuation and GST, indirect tax practices, business financing, and due diligence advisory. He's a founder of Mrs. VPTP and Company. He's also a registered valuer. He was earlier associated with a leading power generation company, Renew Power Private Limited, and Lanco Infotech Limited. He is a member of Institute of Chartered Accountants of India and have all merits at all the stages. He's looking after the valuations such as share entitlement ratio under M&A, fairness opinion, business, ESOP brand, intangible, impairment testing, FDI, ODI, derivative, etc. I hope ये जो valuations के बारे में मैंने अभी बोला है, इन सब के बारे आज हमें पीतम गोयल जी बताएंगे. What is the scope of chartered accountant in the valuation in all the fields? So with this, I welcome both the members. CA Ankit Sharma ji, he's also a senior consultant at VPTP and Company, and both of them are together with us for today's webinar. I welcome you both. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Gurleen sir, for such a wonderful introduction. On the outside, first of all, we would like to thank Jalandhar branch of NIRC of ICAI for giving us this opportunity to give our thoughts on valuations under different statutes and how a chartered accountant can play a major role going forward for the purpose of doing these valuations. So आज का जो हमारा objective है वो ये है कि एज अ स्टैट्यू पर से हमें वैल्यूएशंस कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती हैं और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हाउ वी कैन give our thoughts to our clients and how we can play with those valuations in our real life scenarios. So giving an index, what we will like to cover today, first of all, we will like to cover what is actually the essence of valuation, what is the need of the valuation, the corporate life cycles and valuation thereon. Then we will discuss who all professionals are registered or empaneled for the purpose of issuing the valuation reports under different statutes. This will be the brief basic introduction what the valuation relates to in the different statutes and who all professionals can give the valuations according to different statutes. Then we will come to the practical case studies with regard to all the valuations angles under different statutes. In the last, we will also see some of the judicial pronouncements which will impact as a valuer. And in the last, after that, we can have a question and answers queries. Whosoever have any questions, they can post on the chat box. Also, they can unmute themselves and ask questions in between so as to clarify as and when we are discussing the same. So now coming to the valuation. What is valuation? So in real terms, as a valuer, we are only determining the value to an asset which we are measuring. So we are not giving a price to it. So there is a difference between price as well as value. Price is actually the consideration जो हम पे करके सामान खरीदते हैं, assets procure करते हैं. Whereas value जो बात करते हैं, जो valuer define करता है या determine करता है, that value is actually the worth of the asset. अगर मैं as a chartered accountant, I am determining the price of the asset, I am actually determining its value. हो सकता है किसी पर्सन को कैश की लिक्विडिटी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सो दे आर सेलिंग दोज असेट्स एट अ वैल्यू और एट अ प्राइस विच इज मच लेस देन इट्स एक्चुअल वैल्यू. मींस उसकी प्राइस कंसिडरेशन कैन बी लेस और मोर than the value determined by the valuer. So we need to understand the difference between price and value. Value is something which is actually the worth which we are determining to
price can be over, can be below, or can be equivalent to the value of a particular assets. Price is also dependent on demand and supply. If we see during the COVID scenario initial phase, the shares price dropped drastically, even below 40%, 50%. So actually the price of those stocks was slashed down by 40 to 50%. But actually, when we took this webinars also, we clarified this fact. This is not the deterioration in the value. The company remains as it is. There would be definitely a reduction in the value, but the price which has been slashed down, it is because of the market sensitivity analysis and the risk. So because of the demand and supply, the price have been slashed down much higher than actually the value. So the difference here is value. We as a valuers, we as a chartered accountants are only valuing an assets. We are not giving a commercial price to it. Commercial price is between actual buyer and actual seller themselves. Now, coming back to the definition of the fair value, what do we mean by a value? So there have been different definitions of the fair value under different statute. To start with, सबसे पहले हम इंड एस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या डिफाइन करते हैं फेयर वैल्यू को, हम उसको देखते हैं. If you see the second line, the fair value means the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. So अगर हम ये definition देखते हैं तो we get to know 4 important things. First is fair value के अंदर 4 important parameters हैं. पहला price, second ordinary transaction, third market participants, fourth measurement date. अब हम इसको हर एक वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इसका क्या मीनिंग है. अगर हम बात करते हैं ऑर्डरली ट्रांजैक्शंस का, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मींस दैट द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड हैज अ सफिशिएंट टाइम, एडिक्वेट टाइम. अगर मुझे आज कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, सो जनरली 90 डेज का कंसिडरेशन जो टाइम होता है फॉर द पेमेंट टर्म्स दैट आई एम गिविंग टू द प्रोस्पेक्टिव बायर. आई एम नॉट टेलिंग हिम क्या आप मुझे कल ही पेमेंट करो, यू गिव मी पेमेंट विद इन 7 days एंड आई विल ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू यू. इफ दैट इज द केस, इट विल बी अ डिस्ट्रेस सेल. अगर मैं उसको बोलता हूं आप मुझे 2 साल में पेमेंट दे दो, you give me payment in next 2 years, again that is again not an orderly transaction. Orderly transaction is a transaction jahan there is adequate time from the perspective of a buyer as well as from the perspective of the seller. agar wo adequate time nahi hai, then it will not be treated as an orderly transaction. so hame ye kyun samajhna hai? because jo डेफिनेशन बोलती है, डेफिनेशन ये बोलती है एज अ वैल्यूअर हमें डिटरमाइन करनी है फेयर वैल्यू, एंड फेयर वैल्यू इज अ वैल्यू विच इज ऑन अ प्रिजम्पशन, इट इज ऑन अ बेसिक प्रिजम्पशन दैट दिस हैज बीन कैरिड आउट ऑर्डरली. मींस this transaction has been given sufficient amount of time, adequate amount of time from the angle of buyer as well as from the angle of seller. Second important point in the fair value definition is market participants. It means willing buyer and willing seller should not influence each other. अगर मैं buyer और seller आपस में related parties हैं, holding subsidiary का relation है, holding company ने subsidiary को lower price पे, लोअर कंसिडरेशन पे गुड्स ट्रांसफर कर दिए. सो दैट इज नॉट बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. इट मींस हियर दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर. दीज आर नॉट रिलेटेड. मींस अगर रिलेटेड है भी, देन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज रिलेशंस दे विल नॉट
hamper or they will not deteriorate the principle of value. Means हम related होने के बावजूद भी there will not be any impact on values. So the principle here is, it is assumption कि जो buyer and sellers हैं, these are unrelated and the transaction has been carried out at arm length price. So we are determining an arm length price between willing buyer as well as willing seller at the measurement date. The word is measurement date. It means date on which I am measuring a asset. 31st March 2020 को अगर मुझे कोई शेयर्स की वैल्यूएशन करनी थी, सो उस डेट पे प्राइस अलग होगा, और मुझे 30 सितंबर को शेयर की वैल्यूएशन करनी है तो उस डेट पे प्राइस अलग होगा. सेम थिंग, अगर 31 दिसंबर 2019 को मुझे कोई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी थी, उस डेट पे प्राइस अलग होगा. अगर मुझे 31 मार्च को 2020 को करनी थी तो उस डेट को प्राइस अलग होगा. मीन्स के their difference in measurement date will create difference in pricing, because ऐसे factors होंगे which was not existence as on the date of earlier measurement date, but these were existence in the as on the date of future measurement date. मार्च 2020 को हमें पता था कि कोविड-19 इंडिया में आ चुका है. दे हैव लेट इट प्रेजेंस उसका आ चुका है. सो उसकी वजह से प्राइसिंग पे, वैल्यूएशंस पे एक डिप आया था. अगर 31 दिसंबर 2019 की हम वैल्यूएशन कर रहे थे तो कोविड का रिस्क या इंपैक्ट उस ट्रांजैक्शन पे, उस वैल्यूएशन पे नहीं था. जहां बात हम आज करते हैं 30 सितंबर की, देन द इंपैक्ट ऑफ कोविड इन बिजनेस सिनेरियो might be low or might be high depending on type of industry which we are catering to. अगर मैं कोई होटल इंडस्ट्री को कैटर कर रहा हूं, there might be possible कि उसका इम्पैक्ट कोविड-19 की वजह से ज्यादा आया. जो हमने पहले सोचा था it will be a V-shape recovery, it has converted into U or whatever the case, so that is giving an impact. So we should analyze accordingly कि हम क्या चीज वैल्यू कर रहे हैं, कब कर रहे हैं. सो अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें एज अ वैल्यूअर, जो हम वैल्यूएशन डिराइव करते हैं, उसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, पिलर्स है. क्या है? प्राइस. प्राइस जो हम बात कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली वैल्यू. इट मींस द वर्थ ऑफ एन एसेट. ट्रांजैक्शन कम ज्यादा पे हो सकती है, तभी तो टैक्सेशन लॉज आए हैं जो बोलते हैं 56-10 कि कम पे होगी तो हम जो फेयर वैल्यू है उस पर टैक्स लगाएंगे. तो as a valuer, I am determining a price at which the transaction should have been executed. हम एक वैल्यू निकालेंगे, पहला पिलर. सेकंड, it is based on assumption that this is an orderly transaction given sufficient amount of time. Third, between market participants. Fourth, at a particular date. अगर इन चारों पिलर से कुछ भी वेरिएंस होता है, अगर हमें बाद में फैक्ट्स मिलते हैं कि बायर एंड सेलर वर रिलेटेड एंड दे हैव मेड एन एक्सॉर्बिटेंट ट्रांजैक्शन, सो दैट इज नॉट अ फेयर वैल्यू. सो ये 4 पिलर्स हैं जो हमारे इंडियस बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं कोई और डेफिनेशन की, इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स भी बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट्स मींस द प्राइस दैट द कैपिटल एसेट वुड ऑर्डरली फेच on sale in the open market on the relevant date. Relevant date क्या चीज है? Measurement date. Open market क्या चीज है? Market participants, willing buyer and willing seller. Orderly fetch on sale क्या है? It is just orderly transaction. So अगर हम कोई भी definition देखते हैं तो definition remains same, whether income tax, whether Ind AS, वेदर OECD गाइडलाइंस की बात करें जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, वो भी सेम पैरामीटर्स को क्रीप अप करती हैं. सो दीज 4 आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के अंदर. सो हम द जिस्ट ऑफ दिस इज कि हम कोई भी डेफिनेशन देखें, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट का वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के थ्रू फेयर वैल्यू की डेफिनेशन देखें,
इंड एस की देखें, इनकम टैक्स की देखें, ओईसीडी की देखें, आईबीसी की देखें, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के अंदर फेयर वैल्यू की डेफिनेशन देखें, कहीं पे भी देखें, these four are the basic major pillars for valuing your asset. अगर हम बात करें, जब हम वैल्यूएशन ड्रॉ करते हैं जब हम वैल्यूएशन ड्रॉ करते हैं, इट इज नॉट ओनली अ नंबर गेम, इट इज मच मोर देन नंबर्स. अगर हम बात करें तो लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन ड्रॉ करना एक नंबर्स को प्लॉट करना है. एज अ वैल्यूअर आई एम नॉट प्लॉटिंग नंबर्स. It is up to me. First of all, I need to understand the business methodology, business model, how the company operates, what are its onshore, what are its offshore operations, how these offshores, onshore operations are interlinked, वो क्या क्या ऑपरेशंस अदर रिलेटेड पार्टीज के साथ कर रही है, क्या बिजनेस मॉडल है, कितनी उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्या क्या फिक्स कॉस्ट के अंदर इनकर करना पड़ेगा, देयर शुड बी अ कोटेशन सब टू सब्सटैंशिएटेड. सो अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, we need to go much beyond the number game. Before plotting numbers, before plotting numbers, first of all, we should have a reasoning behind it. Reasoning is actually story. Okay, what company wants to operate in future? What are its guidelines? What are the bases behind it? Whether the company would be able to achieve its objective long-term visions or not. So, being valuing a company, being a valuer, in addition to these numbers, we should have the gist. How these numbers have been derived upon is something as a valuer we should look upon and we should ask from clients. And these stories, these objectives will form the Bible of our valuation. So अगर कल को कुछ भी पैरामीटर उसके अंदर से चेंज होता है, we know कि इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा. So as a valuer, we should understand the reasoning behind these numbers. So with this brief of valuations, so हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए कि valuation derive कैसे होती है, and what is the link between a corporate life cycle and the valuation. So let's say for example, we all know हर company की एक stage होती है. The company initially is a startup company, then it goes into rapid expansion, then there's a high growth stage, and after that the company achieves maturity. And we all know theoretically there is also declining growth in the companies. So when we are identifying the value of a company, we need to understand कि किस stage में वो company अभी stay कर रही है. So if it is a startup company, we all know there are low revenues and earning would be none or negative because startup companies में cash burn किया जाता है, वहां ज्यादा से ज्यादा advertisements किए जाते हैं, business promotion किया जाता है. So we all know कि revenues बहुत कम होंगे, earnings nil होंगी या नेगेटिव होंगी. सो हाउ डू वी डिराइव द वैल्यूएशन? तो स्टार्टअप कंपनीज की वैल्यू डिपेंड करेगी उसकी फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव के ऊपर. सो व्हेनेवर वी आर डूइंग वैल्यूएशन ऑफ अ स्टार्टअप, वी नीड टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट कि आपके बिजनेस के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, आप फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ करना चाहते हैं, बट वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years. Similarly, when a company enter into rapid expansion, that means there is some revenue आ रहा है, revenue धीरे धीरे increase हो रहा है, but still the earnings are very low. और उन earnings के basis पे value depend करना बहुत critical point है. So here also in rapid expansion growth companies also, the valuation is mostly dependent upon the future growth. So in that companies also we will discuss with the management कि आपके future में क्या plans हैं, how do you see your business to go after 5 years. And when a company is in high growth, that is the premium period for any company. जब एक कंपनी के रेवेन्यू बहुत स्पेस से बढ़ रहा है, अर्निंग्स बहुत ज्यादा ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, तो उस स्टेज कंपनीज में हम लोग कैसे वैल्यूएशन डिराइव करेंगे? सो एट दिस स्टेज, हाई ग्रोथ कंपनीज के स्टेज में द कंपनी हैज अ फ्यूचर जहां पे उसके ग्रोथ रेट बहुत हाई है, फ्यूचर में रेवेन्यू बहुत ऊपर जा रहा है एंड अर्निंग्स बहुत ऊपर जा रही है. एंड along with that, by the time a company reaches high growth stage, उन्होंने कुछ assets accumulate किए होते हैं, then those assets will also form part of our valuation. So in high growth companies, what we will do, we'll combine two valuations.
First is the future growth of the company, future perspective of the company, and second, the current assets in hand of the company. These two combined will form the valuation of a high growth company. And when a company is in mature growth, the company is already mature. It's one of the market leaders. Revenue बहुत अच्छा है, consistency के साथ revenue grow कर रहा है, earning के percentage बहुत ज़्यादा है, EBITDA बहुत अच्छा है, profit after tax बहुत अच्छा है. Then how do we derive valuation in these cases? In these cases, what happens? We all know the company is already doing very good. कंपनीज ऑपरेटिंग फॉर क्वाइट अ गुड पीरियड, बहुत अच्छे टाइम से वो लोग प्रॉफिट रन कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज अच्छा है, एबिटा का परसेंटेज अच्छा है. देन इन दोस केसेस माय वैल्यूएशन वुड बी डिपेंडेंट मोर ऑन माय एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लेस ऑन माय ग्रोथ. Because उन केसेस में we all know that every year my EBITDA grows by 2%, 3%, 4%. तो उस केसेस में value would be more dependent upon the existing assets. And theoretically, when a company achieves declining growth, that means the company के revenue declining है, earning declining है, मेरे expenses बढ़ रहे हैं, and the company is not able to manage its cash flow. So उन cases में when the revenues are low, when the earnings are declining, we can say that company की growth नहीं है. The company has negative growth. Company का future perspective नहीं है. So how do we derive valuation of a declining growth company? In those cases, the value of a company would depend upon the assets which are accumulated by the company till the date. So मैं उनकी बैलेंस शीट देखूंगा, उसकी बैलेंस शीट में कौन से एसेट्स आ रहे हैं, उन एसेट से मैं कितने रियलाइज कर सकता हूँ. इट्स मोर ऑफ अ लिक्विडेशन वैल्यू मेथड. When we come to the next slide, we will see कि वैल्यूएशन की नीड कहाँ पड़ती है. So वैल्यूएशन की नीड को हम कैटेगरीली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. First is valuation of a transaction to be undertaken, and those valuations are called price discovery valuations. So what are price discovery valuations? So companies planning for a merger, planning for an acquisition. So they need to know what should be the value of consideration I should pay for this merger, I should pay for this acquisition. What should be the share exchange ratio? If a company is going into IPO, what should be the issue price? What should be the floor price? What should be the base price? And in case of conversion of securities also, at what price I should convert my debt securities or my preference securities into equity securities. So in these type of transactions, what is happening? We are advising the company that this should be the price for undertaking this transaction, and hence these are called price discovery valuations. And the other part of these valuation, which are always linked to these valuation, is valuation for compliance of law. That is called price certifications, where one of the authorized personnel will be certifying those valuation, and those valuation would be for any of the law. For example, for Income Tax Act, for IBC, for RERA, for RBI, for SEBI, for SAFESIA, etc. So in these cases में ये दोनों ट्रांजेक्शन हमेशा लिंक्ड होती हैं, प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस सर्टिफिकेशन. सो फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी अ चार्ट जहां पे बहुत सारे हम एग्जांपल दिख रहे हैं जहां पे हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट हमें एमलगमेशन के टाइम पे भी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, मर्जर एक्विजिशन के टाइम पे भी चाहिए, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के लिए भी चाहिए. एंड इन कंपनीज एक्ट एक स्पेसिफिक पर्सनल प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन वैल्यूएशन करेगा. सिमिलरली इन इनकम टैक्स एक्ट फॉर फर्दर इशू ऑफ शेयर्स हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी. हमें स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी. सिमिलरली SEBI, FEMA, IBC, these all laws prescribe some transactions, some cases जहां पे हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी. So now we need to understand कि किस तरीके से हमें वैल्यूएशन डिराइव करनी है. फॉर एग्जांपल, सो देयर इज अ सिंपल चार्ट जहां पे ताकि अगर मैं एक कंपनी एक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स लेके आती है, सो किस लॉ के अंदर उसको वैल्यूएशन रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी. So for example, when a company is issuing shares, first of all, the Companies Act would ask him कि एक valuation report लेके आओ एक registered valuer से. Similarly, Income Tax Act would say कि section 56 to 7 भी आपके ऊपर apply होता है and you need to get a valuation report from a merchant banker. In the next case, if the company is a listed company, then SEBI would also be attracted and they would also require valuation report. And if the company is issuing transaction to any person, to a non-resident person, then RBI would also be involved. Under FEMA law, they would also require valuation report. Similarly, when there are business combination transactions, scheme of amalgamations, valuation report would be required in company law, SEBI law, and for financial reporting as well, because वहाँ पे Ind AS apply हो जाते हैं. Ind AS 103 business combinations आपको होता है valuation reports लेने के लिए, fair value के ऊपर books में transaction record करें.
Similarly, when a company is showing swap, ESOP, sweat equity shares, तो वहां पे भी हमें different laws के अंदर different transactions prescribed हैं, जहां हमें valuation reports की requirement होगी. Now we need to know कि ये valuation report certify कौन करेगा, because this presentation is more dedicated towards knowing कि हमें किस law में कहाँ valuation report की requirement है. So now we should understand कि the valuation report will be certified by whom. So in this case we have categorized the different laws और उसके अंदर कौन लोग वो valuation report issue कर सकते हैं. So for example in Companies Act section 247 is introduced जहां पे registered valuer का concept introduce हुआ था. And in Companies Act, no other person can issue a valuation report other than a registered valuer. Now, who can be a registered valuer? A registered valuer can be a chartered accountant, can be a company secretary, can be a CMA, can be a graduate also. So there is a whole process जहाँ पे एक person can clear his exams and can become a registered valuer. So in Companies Act, neither a merchant banker is recognized, nor a chartered accountant, nor a cost. ABC also gives reference financing, so सारी valuation reports would be issued by a registered valuer only, not a merchant banker, not a chartered accountant, not a cost accountant. How when we come to Income Tax Act, what happens? Income Tax Act recognizes only two persons. Either it should be a chartered accountant or it should be a merchant banker. So in Income Tax Act, what happens for different transactions? Income Tax Act specified कि इस transaction के लिए कौन valuation report issue कर सकता है. So for example, when a company is issuing fresh shares, so what will happen? Section 56(2)(7)(b) of Income Tax Act would apply. In that case, the valuation report can be issued by a merchant banker only. A chartered accountant cannot issue a valuation report in case of 56(2)(7)(b) valuation. However, when there is a transfer of shares or a person who receives the shares wants to get a valuation report, then in that case, section 56(2)(10) would apply, and in that case, chartered accountant can certify the valuation report. So here in Income Tax Act, for different transactions, there are different persons who can certify the valuation report, but no other person is recognized other than a merchant banker or chartered accountant. So इन दोनों में से एक person valuation report certify करेगा in Income Tax Act. Similarly, in FEMA, chartered accountant, merchant bankers, and cost accountants all are recognized, and anyone can issue a valuation report. And in SEBI regulations, merchant bankers and registered valuers are recognized only. Chartered accountant cannot, in its capacity of a chartered accountant, cannot issue a valuation report. A chartered accountant can be a registered valuer and issue a valuation report under SEBI. Similarly, अभी 2-3 दिन पहले एक circular आया है SEBI का, जहां पे listed company Ankit, I think so your voice is not रिक्वायरमेंट होती है, इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर रजिस्टर्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सिमिलरली सेबी के अंदर भी इंसॉल्वेंसी के रजिस्टर्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है. सो अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई in accordance with section 247 of the Companies Act would be recognized as a registered valuer, and these registered valuer are basically categorized into three broad categories. First is securities and financial assets, second is plant and machinery, and third is land and building. So all in these three separate categories, different persons can be registered valuer. For example, in case of securities and financial asset, a chartered accountant can be a registered valuer, a cost secretary, a company secretary, or a cost accountant can be a registered valuer. However, in case of plant and machinery, the person should be an engineer, and there are some other categories also who can become a plant and machinery registered valuer. With this, I should hand over to Pitam sir for first case study. Thank you, Ankit. So just to give a gist for the same, there is a draft valuer bills 2020 which have come across, and this draft valuer bill 2020, the main agenda is कि जो different person recognized under different statutes,
they want to bring that all those personal and responsibilities of all these professionals in one common roof. So जो ड्राफ्ट बिल 2020 आया है, द मेन एजेंडा इज कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टैट्यूट्स में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, टू club all these together and to bring those all together under one common roof. Now coming back to chartered accountant, what is the role of chartered accountant under different different statutes? If you see, अगर chartered accountant खुद registered valuer है, so in most of the cases we will be able to give the valuation reports as we have a good grip of the numbers. सिर्फ जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है, मेजर जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं, 3-4 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जहां रेगुलरली वी आर रिक्वायरिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम मर्चेंट बैंकर, whether firstly from the perspective of issuance of shares under section 56 to 7b, from the perspective of ESOPs जो perquisites valuations करनी होती है, जो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे केस स्टडी से अंडरस्टैंड करेंगे, ODIs इन्वेस्टमेंट ओवर एंड अबव 5 मिलियन, जहां में अगेन मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट होती है. सो इन जस्ट अगर हम बात करें, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, इन माय as far as my experience is concerned, we can definitely issue the valuation reports under different all the statutes, and this is actually a very good revenue stream for the chartered accountants also, because this is a compulsory, this is a mandatory requirement for the companies to get the valuation report issued. So that is also a very very big revenue stream when we talk about in practical scenarios. So coming to the practical case studies, हमें one more thing which I missed, एक transaction के अंदर there might be multiple valuation reports required, and which we need to understand from various angles कि कौन सा एक्ट उस ट्रांजैक्शन के ऊपर अट्रैक्ट करता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे कौन सी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स रिक्वायरमेंट है. सो वन ट्रांजैक्शन कैन हैव मल्टीपल वैल्यूएशन रिपोर्ट्स अटैच्ड टू दैट सिंगल ट्रांजैक्शन. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट केस स्टडी. फर्स्ट केस स्टडी इज इशुएंस ऑफ शेयर्स. हम इशुएंस ऑफ शेयर्स के अंदर, एक कंपनी है, कंपनी वांट्स टू इशू द इक्विटी शेयर्स. तो अगर इक्विटी शेयर्स इशू करती है, सो मेरे ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है. सो अगर हम बात करें, कंपनी कैन इशू शेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू अ रेजिडेंट इन्वेस्टर्स, ऑल्सो टू अ नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स. अगर हम बात करते हैं, कंपनी कोई रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को इशू करती है शेयर्स थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सो देयर इज अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द वैल्यूएशन रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट एंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट. कंपनीज एक्ट के अंदर कहां रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 247 सेक्शन 62 बोलता है, कभी भी कंपनी कोई इशू ऑफ शेयर्स करती है, देन वी नीड टू गेट अ रिपोर्ट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग दोज शेयर्स साइमल्टेनियसली. इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 to 7 भी क्या बोलता है, जैसे ही कोई कंपनी शेयर इशू करती है, दे नीड टू गेट अ रिपोर्ट from a merchant banker or a chartered accountant or only a merchant banker in case of a DCF approach. अगर कोई कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, टू कंप्लाई विद रूल 11UA, वो जो बोलता है कि अगर वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा पे कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, then the difference between the fair value and the issue price will be deemed as is income under the head other sources. Same thing, section 56 to 10 also gets attracted with respect to the issuance of shares. कि अगर किसी इन्वेस्टर, अगर मैंने सपोज, इसको समराइज करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी के मैं 100 शेयर सब्सक्राइब कर रहा हूं प्राइवेट लिमिटेड के, और उस कंपनी की फेयर वैल्यू 50 रुपीज है. सो अगर मैं 100 into 50 करता हूं, तो 5000 इज द सब्सक्रिप्शन अमाउंट विच आई नीड टू पे अप. अगर मैंने 10,000 रुपीज पे करे, जो 50 रुपीज आया है ये मेरा फेयर वैल्यू है. अगर मैंने 10,000 रुपीज पे करे, सो सेक्शन 56 to 7B विल बी अट्रैक्टेड और 50 रुपीज विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. सो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या 56 to 7B की हम कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जहां तक बात 56 to 10 कंप्लायंस की आती है, देयर आर टू मेथडोलॉजीज.
One is NAV and another is DCF methodology. NAV जहां तक बात करते हैं NAV की, a chartered accountant or a merchant banker can issue that report. अगर हम DCF की बात करते हैं, only merchant banker can issue the report. अगर हम subsequent second leg लेते हैं, 50 रुपीज की फेयर वैल्यू थी और मैंने कंपनी के शेयर्स 30 रुपीज पे लिए हैं, then 20 rupees will be taxed in my hand under section 56 to 10 और 20 रुपीज पे मुझे टैक्स देना है. सो अल्टीमेटली अगर मैं एक इशुएंस ऑफ शेयर्स की बात करूं, इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंस जनरली देयर आर 3 वैल्यूएशन रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड. One is under Companies Act, one is under section 56 to 7B of Income Tax Act, and third is 56 to 10 of Income Tax Act. जहां तक बात इसकी मेथडोलॉजी की आती है, जो इशुएंस ऑफ शेयर्स होता है जनरली is equal to the value derived by the registered valuer. Value determined under section 56 to 7B is the maximum value and the value determined under section 56 to 10 is the minimum value. So जो मेरी issue of price होगी, issue of shares की price होगी, that will have to be greater than 56 to 10 and lower than 56 to 7B. Also friends, please try to understand that the methodologies of all these sections 56 to 7B and 56 to 10 are different. So one valuation report is not required, as the methodology as defined by the statute is different for section 56 to 7B and different for section 56 to 10. Hence we need to have the separate valuation reports under both the section to comply with. अगर हम बात करते हैं, अभी हमने देखा वी आर इशुइंग टू अ रेजिडेंट, अगर हम बात करते हैं वी आर इशुइंग शेयर्स टू नॉन रेजिडेंट, देन अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कंप्लाइंस, इन 3 कंप्लाइंस के अंदर से 56 to 7B की कंप्लाइंस विल बी रिडंडेंट एज 56 to 7B डज नॉट अप्लाई अगर हम शेयर्स इशू करते हैं नॉन रेजिडेंट को. बट साइमल्टेनियसली देयर इज ऑन अदर स्टैट्यूट FEMA, RBI, which gets attracted, and we need to issue a report for the purpose of the compliance of issuing shares to non-resident through FCGPR filings. तो जो हम FCGPR filings करते हैं, then we need to get a report from a chartered accountant or a merchant banker to comply with the RBI requirements. So अगर हम बात करें to give a snapshot just for the purpose of issuance of shares, Companies Act, FEMA and Income Tax Act gets attracted. We need to understand कि हम रेजिडेंट को इशू कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट को इशू कर रहे हैं. अगर रेजिडेंट को इशू कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के अंदर हमें 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए प्लस कंपनीज एक्ट की रजिस्टर्ड वैल्यूअर रिपोर्ट चाहिए. अगर मैं नॉन रेजिडेंट को कर रहा हूं तो इनकम टैक्स की एक चाहिए, कंपनीज एक्ट की एक चाहिए, एज वेल एज आरबीआई की एक चाहिए. हो सकता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन केस ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, then he can club RBI and Companies Act report together. But when we talk about 2 valuation report under Income Tax Act, these have a different methodologies attached to it, which need to be complied with separately. So in nutshell, this single transaction attracts multiple valuation depending on the criteria. Please do remember friends, this is something which we discussed only for unlisted shares. जहां पर लिस्टेड शेयर्स होता है, we need to see the other parameters which are there in the presentations, but because of shortage of time we will not be able to cover those because उसके अंदर जो minimum values है that are determined through SEBI. So it is the whole objective of this webinar is to give you the introduction about the valuation field and where all the valuation may be required. So taking up the second case study, we are talking about transfer of shares. So in first case study हमने issuance of shares देखा जहाँ पे एक company ने share issue करा whether to a resident or whether to a non-resident. Now in case of transfer of shares, we are also going to discuss similar type of transactions. So what happens when the transaction is between residents, and what happens when the transaction is between a resident and a non-resident?
So in first case, a resident can be transferring shares to a non-resident, and in other case, a non-resident can be transferring shares to a resident. So let's see in both cases what happens. So whenever there is a transfer of shares between a resident to resident, so for example, here is a case where Kalpatru Power Transmission Limited transferred its shares to CLP India. So in that case, what happens? Income Tax Act के दो section apply होते हैं. On seller, section 50CA would apply, and on buyer, section 56 to 10 would apply. There would be no application of section 56 to 7B. Only 50CA on seller and 56 to 10 on buyer. So in both the cases, there is a specifically prescribed methodology. जिस methodology से हमें valuation करनी होती है, and that methodology is prescribed in Rule 11 UA of Income Tax Rules. So in both the cases, what would happen? A chartered accountant or a merchant banker can certify the valuation of the shares, where both the sections say that transaction should not be undertaken below this price. So जो value derive की जाएगी under section 50CA and जो value derive की जाएगी under section 56 to 10 through the use of Rule 11 UA, so transaction should be undertaken on any value which is above that fair value. In these cases, both the seller and the buyer would be requiring a valuation report. In the other case, when there's a transfer of shares from a resident to non-resident. So let's say, for example, here's a case where, let's say, Binny Bansal transferred his shares to a person who is a resident of USA. So what would happen in case of seller? Income Tax Act would apply, and section 50CA would require him to take a valuation report as per Rule 11 UA. Similarly, since a transaction is being undertaken between a resident and non-resident, FEMA would also apply, and that would require a valuation report from a chartered accountant or a merchant banker or a cost accountant. So in both these cases, what happens in 50CA, Rule 11 UA is prescribed, and in FEMA, there is no specific prescribed methodology. What it says any internationally accepted methodology is acceptable for deriving the fair value under FEMA. So in this case, seller would require two valuation reports practically in 50CA of Income Tax Act and under FEMA. However, since chartered accountant are eligible for issuing valuation report under both the cases, there could be a single valuation report club for both the cases. Similarly, when we talk from the buyer's point of view, section 56 to 10 would apply on that buyer. And correspondingly, FEMA would also apply. In that case also, he would require two valuation report, one for income tax purpose and other for FEMA purpose. And in both the cases, the methodology remains the same as in the case of seller. That means Rule 11 UA would be applicable for deriving value under section 56 to 10. And in FEMA, there is no methodology prescribed. It says only any internationally accepted methodology is acceptable under FEMA. So, and here also a single valuation report can be issued by a chartered accountant, which can do for both the purposes. And in the retrospective case, where the shares are transferred from a non-resident to a resident, what happens? Income Tax Act would not apply in the hands of seller, because the seller has no income from India. And similarly, FEMA would also not apply in case of seller. However, buyer would need to get a valuation report under section 56 to 10 and under FEMA. In both the cases, valuation report would be required. Now, what happens? Income Tax Act हमने बोला कि Rule 11 UA prescribed है for deriving the value under section 56 to 10 or 50CA. So, what methodology is prescribed under Rule 11 UA? The formula says A plus B plus C plus D minus L multiplied by PV into PE. Now, what is this A, B, C, D, and L? So A means book value of all the assets other than shares and securities, other than immovable properties, and other than all architecture collection, etc. In these cases, what would happen? Shares and securities should be used at a market value. Immovable property should also be used at market value, and other archaeological collections, etc., would also be required to be valued at market value. And what is L? L means the book value of all the liabilities. So here under Rule 11 UA, we are basically identifying the net worth of the company, and the transaction should be undertaken on any price that is above this fair value calculated under Rule 11 UA.
And as we already discussed, FEMA has no specifically prescribed methodology. It only says any internationally accepted valuation principle would be can be applied for valuing the shares in the FEMA. In the next case, we are going to discuss valuation of Quasi instruments that would be taken by Pitam sir. So friends, हमने अभी देखा कि issuance of shares पे क्या क्या requirement होती है valuations की under different statutes as well as transfer of shares पे. अब हम एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं क्वाजी इंस्ट्रूमेंट्स पे. जहां बात आती है क्वाजी इंस्ट्रूमेंट्स की, these are very dynamic instruments and these are being used by various MNCs as on today. This is a very good source how to bring in money into India or to for an investor to issue. बात करें क्वाजी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की, क्या होते हैं क्वाजी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स? क्वाजी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स which have the basic principles of equity instruments as well as debt instruments. So अगर हम बात करें क्वाजी इक्विटी की, इसके अंदर कई फीचर्स इक्विटी के होते हैं, कई फीचर्स डेट के होते हैं. So it is just a mix of equity as well as debt. That is the reason हम इसको quasi equity instruments बोलते हैं. बात करते हैं what are the types of quasi equity instruments. अगर हम types की बात करें, we can issue quasi equity instruments in two forms, debentures or preference shares. Preference shares can be compulsorily convertible, can be optionally convertible, can be redeemable preference shares. Debentures again can be compulsory convertible debentures, optionally convertible debentures and redeemable debentures. So हमने क्या देखा? Two type of quasi instruments हैं, preference shares as well as debentures. Both these types further has three parameters: compulsory convertible, optionally convertible and redeemable preference shares. अगर हम बात करें separate leg की, these are to be categorized separately for the purpose of valuations. हम बात कर रहे हैं issuance की, quasi equity instruments की valuations की. अगर कोई कंपनी क्वाजी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो उसको कहां रिक्वायरमेंट आएगी वैल्यूएशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर कंपनीज एक्ट, सेकंड अगेन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, थर्ड अगेन अंडर फेमा. अगर मैं ये इन्वेस्टर मेरा नॉन रेजिडेंट है, देन अगेन देयर वुड बी इश्यूज फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू फेमा. जहां तक बात आती है इनकम टैक्स एक्ट की, 56 to 7B जो सेक्शन अट्रैक्ट होता है वो सिर्फ अट्रैक्ट होता है शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे अट्रैक्ट नहीं होता. सो सीसीपीएस के इशुएंस पे सेक्शन 56 to 7B अट्रैक्ट होगा, डिबेंचर्स के इशुएंस पे सेक्शन 56 to 7B अट्रैक्ट नहीं होगा. 56 to 10 जहां तक बात आती है, दोनों केसेस में अप्लाई होता है, सीसीपीएस के लिए भी, सीसी प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी या डिबेंचर्स के लिए भी. कंपनीज एक्ट की बात करें तो दोनों केस में अप्लाई होता है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी. सो हमें अगर हम कोई भी इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, सो हमें कंपनीज एक्ट के अंदर भी वैल्यूएशन चाहिए, इनकम टैक्स में भी चाहिए, डिबेंचर्स के लिए 2 चाहिए, 1 चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 2 चाहिए. और अगर हम ये नॉन रेजिडेंट को इशू करते हैं तो वी नीड टू गेट अ रिपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ फेमा कंप्लायंस आल्सो. अब हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करें, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हम पहला केस लेते हैं. पहला केस इज रिडीमेबल डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. जहां वर्ड आ गया रिडीमेबल, इट मींस के 5 साल बाद, 7 years down the line, 5 years down the line, 10 years down the line, these preference share will be redeemed. हम उसको पैसा वापसी दे देंगे और ये शेयर एक्सटिंग्विश हो जाएंगे. सेम थिंग डिबेंचर्स में, 5 साल बाद, 7 years down the line, 10 years down the line, we will repay it back and get the debentures back. So debentures will be extinguished. So जहां तक बात आती है redeemable preference shares की, redeemable debentures की, the valuation approach would be, we will treat this as a pure debt. जितना भी इंटरेस्ट मुझे रिसीव होना है, आई विल डिस्काउंट इट along with principal repayment जो मुझे एंड में मिलना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय करंट डिस्काउंट रेट आई विल वैल्यू इट.
सो अगर मैं बात करता हूं रिडीमेबल ऑप्शंस की, redeemable preference shares, redeemable debentures, these both will be treated as the debt instruments for the purpose of valuing. अब बात करते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की या ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की। अगर मेरे पास ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स में एक ऑप्शन है कि 5 years डाउन द लाइन कंपनी विल गिव द इन्वेस्टर ऑप्शन कि उस डेट पे जो भी इक्विटी शेयर का प्राइस होगा उसके रेसिप्रोकेटिंग हम आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, एंड इन केस द इन्वेस्टर डोंट एग्री, अगर इन्वेस्टर को अच्छा वो ऑफर नहीं लगता, दे कैन टेल द कंपनी के आप मुझे मेरे पैसे या फंड्स रिटर्न कर दीजिए। That is an optionally convertible preference shares or optionally convertible debentures, wherein an investor has an option to get his instruments converted into equity shares. In that case also, as the conversion rate is not determined today, whereas the conversion rate will be determined later, जिस डेट को कन्वर्ट होने हैं, hence these type of instruments will be treated as प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एज ऑन टुडे, कि आज के दिन मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के अगेंस्ट व्हाट आई एम गेटिंग, व्हाट इज द रेवेन्यू सोर्स आई एम गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट, चाहे वो मुझे कैश में मिलेगा चाहे वो मुझे इक्विटी की फॉर्म में मिलेगा, हेंस दीज विल बी ट्रीटेड एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड सबसेट, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर हम कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, सो देयर आर टू थॉट्स। अगर तो कन्वर्जन टर्म्स मेरा आज ही डिफाइंड है, मींस आज ही मुझे मेंशन कर दिया है कि एक प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट आपको एक डेट मिलेगा, एक इक्विटी शेयर मिलेगा 5 years डाउन द लाइन, देन these instruments my friends are as good as equity shares, क्योंकि this is only a nomenclature, मैं उसको CCPS दे रहा हूं, but 5 years down the line these will be converted into equity shares, and hence जब हम diluted EPS निकालते हैं we consider these CCPS for the purpose of EPS calculation. Same thing, nomenclature of this CCPS is equity share as on today only, so we need to value these CCPS as equity shares. Same thing CCD, अगर मेरे conversion terms आज ही defined है 1:1, 1:5, 5:1, whatever the case may be, अगर मेरे conversion terms आज ही defined है, then it is as good as treating these instruments as equity shares. मगर जहां मेरे conversion terms आज defined नहीं है, and I will be having the conversion terms defined at the date of conversion, means मेरी term sheet क्या बोलती है, at the time of conversion जो भी equity shares का price होगा, on the basis of that price and the value of the preference shares, the conversion will take place. In that case it will be as good as that these instruments are treated as debt for the purpose of valuations. So हमने broadly हमने क्या देखा कि CCPS डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वैल्यूएशंस के अंडर डिफरेंट स्टैट्यूट्स, और क्या क्या इसकी बेसिक मेथडोलॉजीज है। नाउ कमिंग टू केस स्टडी 4, दैट इज अरेंजमेंट्स एंड अमैल्गमेशंस। हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स की। अरेंजमेंट covers two things, merger as well as demerger. Acquisition categorically includes एक असेट को परचेज करना या शेयर परचेज करना। कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन मींस बायबैक ऑफ शेयर्स और कैपिटल रिडक्शन। सो अगर हम अरेंजमेंट्स एंड अमैल्गमेशंस की बात करें, अरेंजमेंट मर्जर डीमर्जर, एक्विजिशन बाय आउट ऑफ शेयर्स और बाय आउट ऑफ असेट्स, थर्ड थिंग इज कैपिटल रिडक्शन और कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अब बात करें मर्जर एंड डीमर्जर की, व्हाट डू वी मीन बाय इट? Merger in simple terms means two companies merging into one company. A and B company है, A company gets merged into B और B company gets merged into A. Demerger की बात करें, एक कंपनी है A, उसके दो डिवीजन है,
एक डिवीजन ए में रह गया, दूसरे डिवीजन बी कंपनी में नई कंपनी में शिफ्ट हो गया, तो दैट इज द केस ऑफ डीमर्जर। सो अभी जो हम इस केस स्टडी से अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आर द वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट्स अंडर डीमर्जर एंड मर्जर केस। सो अगर हम बात करें, जब भी एनसीएलटी के पास प्रपोजल पुट अप होता है फॉर द पर्पस ऑफ मर्जर और डीमर्जर, अ वैल्यूएशन रिपोर्ट नीड टू बी अटैच्ड टू डिटरमाइन कि इस मर्जर का बेसिस क्या है, इस मर्जर की वजह से व्हाट विल बी द शेयर एंटाइटलमेंट रेशियोज। अगर मर्ज हो रही है, ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो रही है, तो ए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसको बी कंपनी के कितने शेयर्स मिलेंगे इज समथिंग विच वी नीड टू सी। अगर कंपनी डीमर्ज हो रही है, सो ए कंपनी के शेयर होल्डर्स को बी कंपनी के कितने शेयर्स मिलेंगे इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशंस की। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वैल्यूअर। फर्स्ट जो पैरामीटर आता है वो आता है अपना शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो डिटरमाइन करने के लिए, जिसके बेसिस पे एप्लीकेशन सबमिट होती है एनसीएलटी के अंदर। जब एनसीएलटी एप्लीकेशन अप्रूव कर देती है, उसके बाद जब कंपनी मर्ज होगी या कंपनी डीमर्ज होगी, उसके अंदर एज अ वैल्यूअर आई विल गिव अ परचेज प्राइस एलोकेशन, पीपीए रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, जिसके बेसिस पे मैं बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग करूंगा। सो अगर एज अ वैल्यूअर हमें अंडरस्टैंड करना है, देयर आर 2 पर्सपेक्टिव मर्जर या डीमर्जर केस में। पहला है बिफोर अप्रूवल, अप्रूवल से पहले जो मैं शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो देता हूं जिसके बेसिस पे स्कीम अप्रूव होती है। सेकेंड, आफ्टर अप्रूवल जो मैं बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग करता हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल पीपीए, परचेज प्राइस एलोकेशन रिपोर्ट, दैट इज अगेन गिवन बाय अ वैल्यूअर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द एक्वायर्ड ट्रांजैक्शंस। ए कंपनी बी कंपनी में जो मर्ज हुई, ए कंपनी के जो असेट्स है बी कंपनी किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेगी इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो की। शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो निकलती कैसे है? सपोज ए कंपनी और बी कंपनी 2 कंपनीज है। ए कंपनी की प्राइस पर शेयर है 100 रुपीज या 20 रुपीज, और बी कंपनी की प्राइस पर शेयर है 10 रुपीज। सो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो रही है, सो ए कंपनी का शेयर होल्डर कितने रुपीज फोरगो कर रहा है? 20 रुपीज, क्योंकि उसकी शेयर की वैल्यू कितनी है? 20। और अब वो कंपनी ए कंपनी में मर्ज हो रही है, बी कंपनी में मर्ज हो रही है, जिस कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो ए कंपनी जो अपने 20 रुपीज का एक शेयर छोड़ेगी, उसको बी कंपनी के कितने शेयर मिलने चाहिए? 2 शेयर्स। सो द शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो वुड बी 2 शेयर्स पर शेयर ऑफ ए कंपनी। So this is what we call share exchange ratio, share entitlement ratio. Share exchange ratio या share entitlement ratio निकालने के there are various methodologies, and in principally जो courts ने बोला है we need to give a weighted average to any of the 2 methods, income approach, market approach, asset based approach. So these 3 are general approaches through which we value a shares. सो वी नीड टू डिटरमाइन कि हम किस टाइप की इंडस्ट्री को वैल्यू कर रहे हैं। अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है, सो वी विल वैल्यू इट अकॉर्डिंग टू द असेट बेस्ड अप्रोच, के उसकी असेट की तो मेन वैल्यू है। अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, सो वी विल हैव द इनकम अप्रोच प्राइमरली। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, सो वी कैन वैल्यू दीज कंपनीज थ्रू मार्केट अप्रोच ऑल्सो, थ्रू इनकम अप्रोच ऑल्सो. So for the purpose of these SCRs, we have to determine both the company valuation based on different approaches, and on the basis of those valuation, we will determine the share exchange ratios. जब ये share exchange ratio NCLT में जाके अप्रूवल होता है, उसके बाद जब एक्चुअली में कंपनी उसको टेक ओवर करती है, जब ए कंपनी के एसेट्स बी कंपनी में रिकॉर्ड होंगे,
हो सकता है कि अब हमने बोला 20 रुपीज के अकॉर्डिंग हमने शेयर्स तो इशू कर दिए. सपोज मैंने 2 लाख रुपीस के शेयर्स इशू कर दिए फॉर द पर्पस ऑफ अक्वायरिंग ए कंपनी. अब ए कंपनी के जो असेट्स बी कंपनी रिकॉर्ड करेगी, उसको रिकॉर्ड करने के लिए वी विल डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी असेट्स. और जो भी डिफरेंस होगा बिटवीन द इशू एंड द असेट्स रिकॉर्डेड will either be categorized as goodwill or will be categorized as a capital reserve. So being a valuer, हमें ये pitch करना है. We need to understand कि अगर मैंने किसी client को SCR ratio दी है, there is also another work which we can get in the form of PPA allocation reports at the time of actual allocation is something which we need to understand. And this is also important. ये both valuation reports are required from a registered valuer only, as these both are required under Companies Act 2013. So coming to the next case study, that is slum sale. So for understanding the valuation of slum sale, we need to first understand the definition of slum sale, what slum sale actually means. So slum sale is a similar transaction just like a merger and amalgamation. So here what is happening, एक business unit, एक division, एक company, एक entity is being transferred as a going concern where no value is being assigned to any individual assets or liabilities. That means a company जैसी कि run कर रही है, that would be transferred as it is in the running stage for some lump sum consideration. So section 2 subsection 42C of Income Tax Act defines slum sale as the slum sale means the transfer of one or more undertakings as a result of the sale for a lump sum consideration without values being assigned to individual assets and liabilities in such sale. So here what is the essence of slum sale? That means a business tha, that was a going concern business running quite well, and that is transferred as it is to any other person for a lump sum consideration. For example, that could be a 50 lakh or 1 crore value, and उसके अंदर हमने किसी भी asset को या किसी भी liability को individually value नहीं किया, हमने उसके अंदर किसी भी asset या liability को कोई value assign नहीं की. That means पूरा का पूरा business as a whole is being valued for a lump sum consideration and is being transferred. So in these cases, whether it is a merger acquisition or whether it is a slum sale, what is the upshot of these transactions? That means here the buyer needs to get a purchase price allocation report. As Pitam sir was saying, purchase price allocation means allocation of the price I have paid. That means as a buyer, if I have paid something for acquiring a company or for acquiring a business, then I should allocate to myself that this price is allocated to how much to the assets, how much to the liabilities, how much to the intangible assets, and how much to the goodwill. So in this purchase price allocation report, what happens? Seller is not identifying, seller is not allocating the value of individual assets and liabilities. It is the buyer who is allocating the value individually. And for what purpose? That can be for the purpose of recording it in the books of accounts, or that can be for internal evaluation कि कितना हमें benefit, कितनी beneficial थी ये transaction या कितना हमें इससे future में benefit मिल सकता है. And for the purpose of recording also, Ind AS and accounting standard specifically provides कि in these cases of merger and acquisition or slum sale, the buyer should in its books of account allocate the purchase price to individual assets and then recognize whether he has paid anything for goodwill or whether he has got any benefit of capital. Then he should recognize in its books of accounts that goodwill or capital reserve accordingly. And here, in case of merger and acquisition or slum sale transaction, what is the main point of valuation? What underpins the valuation of the business? Whether there is any asset which is specifically beneficial to me. In case of companies, there could be trademarks, there could be patents, there could be any other intangible assets. Similarly, there are people also. For example, in case of acquisition of a company which is doing quite well, the value is being derived on the basis of the assets which the company has and the people which would be merged
to the resulting company. So in case of merger हो सकता है कि हमारे पुरानी कंपनी के डायरेक्टर्स हमारे बोर्ड में आ जाए, हमारी पुरानी कंपनी के सीईओ हमारे बोर्ड पे आ जाए, देन दैट कुड बी ए बेनिफिशियल केस ऑफ फॉर अस कि हम वहां पे ज्यादा अच्छी एडवाइजरी मिलेगी, उस कंपनी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उस कंपनी के ज्यादा अच्छे से हम आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कर पाएंगे. सिमिलरली कमिंग टू द नेक्स्ट केस, जहां हमने अमलगमेशंस की बात कर ली, मर्जर्स की बात कर ली, हमने स्लम सेल की बात कर ली. So in these cases, we have talked from the point of view of the transaction being undertaken. And once the transaction is being undertaken, there can be a case of minority squeeze out. So what does that minority squeeze out means? So for understanding this term, we should refer to section 236 of the Companies Act, where it says that a company post a transaction of merger and acquisition can offer the minority holders to acquire the shares held by such minority holders at any fair value. For example, in case of a Flipkart and Myntra example, as we discussed earlier, so for example, Flipkart acquired Myntra, and Flipkart acquired 90% holding of that Myntra, and now other than another 10% is being held by Mr. A. So now what, as per section 236 of Companies that Flipkart can do, Flipkart can offer Mr. A कि you transfer these shares to me and I'll pay you the fair value for these shares. And in this case also, the valuation report would be required, and that valuation report should come from a registered valuer. Now, understanding it from a Companies Act point of view, section 236 would be applicable and Flipkart would require to get a valuation report. Accordingly, section 56 to 10 would also be applicable on Flipkart. Section 56 to 10 of Income Tax Act says whenever a company or a person receives any shares and securities, तो उस केस में वो जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज रिसीव किए हैं, इफ दोस ट्रांजैक्शन इज बीइंग अंडरटेकन at any price below the fair value, then that fair value would be deemed to be the transaction price and would be taxed accordingly. So जहां फ्लिपकार्ट ने कंपनी एक्ट को कंप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट ली, Flipkart would require another valuation report under section 56 to 10 by following rule 11 UA, and that valuation report can come from a chartered accountant or from a merchant banker. And in both the cases, section 230, whether it is section 236 of Companies Act or whether it is section 56 to 10 of Income Tax Act, in both the cases, the transaction should be undertaken at any price which is above the fair value in these valuation reports. And when we talk from the point of view of the seller, what is happening in the hands of seller? In the hands of seller, sorry, there are some disturbances. Sorry, is someone trying to speak? Hello. Okay, so in the hands of buyer, we discussed section 236 of Companies Act and section 56 to 10 of Income Tax Act. And in the hands of seller, what is happening? There is no compliance under Companies Act. The only compliance would be under section 50 CA of Income Tax Act. That would say कि rule 11 UA follow करो, एक valuation report निकालो from a merchant banker or a chartered accountant, and that valuation report would be required. And वो जो transaction है, that should be undertaken at any price that is above the fair value derived in that valuation report, whether it is for 50 CA or 56 to 10 or section 236 of Companies Act. So now coming to the next case study, how we will value the IPRs, the intellectual property rights, how to value these. अगर हम IPR की बात बोले, so patents, trademarks, brand valuation, license is something जो हमारे दिमाग में आता है, माइंड में आता है. अगर किसी मेडिसिन कंपनी ने, ड्रगिस्ट कंपनी ने कोविड की 19 की मेडिसिन बनाई, then they will apply a patent attached to it. और पेटेंट की बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलेशन जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने पेटेंट अपना फॉर्मूला को कराया, दैट विल हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट. उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट में जो उसके पैसे खर्च करे, जो उन्होंने उसका रिस्क लिया, जो अप्रूव हुआ, दैट हैज सम वैल्यू अटैच्ड टू इट. अगर कोई ब्रांड नेम है, पेप्सी है, कोक है, पिज्जा हट है, कोई भी ब्रांड नेम है, दैट आल्सो हैव अ वैल्यू अटैच्ड टू इट. So how to value these IPRs is something जो हमें understand करना है. जब हम बात करते हैं valuation of these IPRs की, these are very very important. Just to give few of the examples,
अगर कोई कंपनी ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजीम से इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजीम्स में जाती है, देन दे हैव एन ऑप्शन कि आप अपने सारे एसेट्स को रीवैल्यू कर सकते हो एट द फेयर वैल्यू. There is something as a valuer we get an option to value these IPRs also. अगर कोई जो उसका ब्रांड नेम है, they want to define a value attached to it for the purpose of recording in their books. Second thing, अगर हम बात करें IPRs की, अगर कोई बंदा अपना IPR बेचना चाहता है, अगर मैं अपना मेरी बुक्स के अंदर IPR है, इंटेंजिबल एसेट है, ब्रांड है, एंड आई वांट टू सेल इट आउटराइटली, अगर मैं उसको सेल करता हूं, देन माय फ्रेंड्स अगेन इनकम टैक्स एक्ट भी लगता है. देन वी हैव टू सी कि ये गुड्स है और इसके ऊपर क्या जो वैल्यूएशंस हुई है, दैट द ट्रांसफर इज एज पर एप्रोप्रिएट आर्म लेंथ प्राइस और नॉट, इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो दीज आर द फ्यू कॉमन ट्रांजैक्शंस अगर हम बात करें जहां पर आईपीआरस की रिक्वायरमेंट होती है वैल्यूएशंस की. अपार्ट फ्रॉम दैट, आईपीआरस कमिंग outside India into India, from India outside India is something which we need to see from taxation point of view. क्या बाहर से जब IPR बिकता है, so क्या उस पर टैक्स अट्रैक्ट होता है? इफ होता है तो क्या वैल्यूएशन गाइडलाइंस अट्रैक्ट होती है? समथिंग which we need to understand. So basic idea is IPR valuation is also very important and might come up in case some of you are also handling India's clients. There is something जहां IPR valuation important role play करती है. Goodwill का, अपना brand का is something which we need to understand. जो हमने पहले understand करा, देखा कि अगर कोई मेरा slum sale है या मेरा कोई amalgamation केस है, merger acquisition का केस है, उस केस में IPR अगर है, सो आईपीआर की वैल्यूएशन पहले हम अलग करेंगे और उसके बाद हम शेयर एंटरटेनमेंट रेशियो निकालेंगे. इज समथिंग व्हिच वी कैन आल्सो फोरसी. देखना पड़ेगा कि अगर आईपीआर उसने रॉयल्टी के लिए दे रखा है, इसके पे मैं रॉयल्टी कमा रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग दैट आईपीआर फॉर द पर्पस ऑफ माई सेल्फ बिजनेस, और उसको मैंने किसी और को राइट देके सिर्फ आई एम अर्निंग रॉयल्टीज, तो उस केस में क्या उस आईपीआर की वैल्यूएशन डिराइव करके इट हैज टू बी एडेड बैक फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इज अगेन टू बी सीन. So, अगर हम बात करें IPR की, what are the methods attached to it? The methods are royalty relief method. This is the most common method. अगर हम royalty relief method की बात करते हैं, this is the method through which हम determine करते हैं कि जो मेरा IPR है, जो मेरा पेटेंट है या जो मेरा ब्रांड नेम है, इसकी वजह से अगर ये मैं खुद यूज नहीं करता या मेरे सब्सिडरी यूज नहीं करती, तो ये अगर मैं मार्केट में एज देता किसी को यूज करने के लिए, सो वो मुझे टर्नओवर का कितना परसेंट एज रॉयल्टी देता फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस मेथडोलॉजी. दिस ट्रेडमार्क इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. जहां तक बात ये रॉयल्टी रेट्स की आती है कि कितना रेट होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, is something which is also governed through transfer pricing guidelines, OECD guidelines, databases, royalty stat data हो गए, अपना कैपिटल IQ डेटास हो गए, पॉवरेस्ट डेटा हो गए. तो इन डेटास के बेसिस पे हमें रॉयल्टी परसेंटेज डिटरमाइन होता है कि क्या परसेंटेज पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर फ्लो हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दोस रॉयल्टी परसेंटेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेंटेज वी बैक कैलकुलेट कि उस ब्रांड की एक्चुअल वैल्यू क्या है, एंड वी डिस्काउंटेड यूजिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैट ऑन द बेसिस ऑफ the industry which this brand name pertains into. अगर किसी के पास पेटेंट का ट्रेड नेम आ गया, then we may use multi excess earning methodologies also, कि 2 साल तक मेरी income because of this patent will be high. After that it might be on a steady pace, not an accelerated pace. Is something which we need to understand कि कौन सा मेथड मैं लगा रहा हूँ for the purpose of valuing which intangible assets or which IPR is something which I need to understand. So the common method की बात करें, so common methods are royalty relief method, multi-excess earning method, and profit split method. So royalty relief method and profit split methods go simultaneously side by side. Multi-period excess earning method is something जो derive होता है DCF methodology से कि because of these patents what excess as a company I am earning.
अगर ये पेटेंट मेरे पास नहीं होता, ये ट्रेड नेम मेरे पास नहीं होता, तो मेरी क्या अर्निंग थी और इसकी वजह से मेरी क्या अर्निंग है, कितना मैंने एक्सेस कमाया है। अगर मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है, सो कितना परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन इज बिकॉज ऑफ दीज असेट्स इज समथिंग विच वी नीड टू एनालाइज विद एंड विदाउट मेथड। ये बोलता है कि अगर ये ट्रेड नेम अगर मैं खुद यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट इन बिल्डिंग एनी कॉस्ट, अगर मैं ये खुद यूज नहीं करता तो मैं कितना इसके अगेंस्ट दे रहा होता आज के दिन। अगर कोई और इसको ओन करता तो मैं कितना दे रहा होता, और आज के दिन जो मैं नहीं दे रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस इज द एक्चुअल ब्रांड वैल्यू अटैच्ड टू इट, इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अगर इन नटशेल बात करें, ब्रांड वैल्यूएशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो मेजर मेथडोलॉजी यूज होती है वो यूज होती है रॉयल्टी रिलीफ मेथड एंड प्रॉफिट स्प्लिट मेथड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूइंग दीज इंटेंजिबल्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट केस स्टडी की, ईसॉप्स की, सो ईसॉप्स की क्या फ्रेमिंग होती है, that Ankit will explain, and then coming back to valuation aspect, that I will take care. So when we start discussing about ESOPs, first of all, we should understand कि ESOPs क्या होते हैं. So we all know ESOPs होते हैं, company gives some rights to the directors, officers, employees of the company, जहाँ पे those director, officers and employees have a right कि एक particular predefined price के ऊपर वो employee उस company के shares ले सकता है. Now, Section 2, subsection 37 of Companies Act has specifically defined what are ESOPs. So it says that ESOPs means the option given to the directors, officer, or employees of the company or of its holding a subsidiary company or a companies, if any, which gives such director, officer, or employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price. So in this definition, what all points are to be kept in mind? First of all, ESOPs are the option, which are option in the hands of those director, officers, or employees, that they can subscribe to the shares of the company at a future date at a predetermined price. That means option to subscribe the shares at a future date at a predetermined price. So these are the 4 points which are kept in mind when we want to understand the valuation of ESOPs. So how ESOP cycles are formulated? First of all, when a company wants to apply ESOPs, when a company wants to implement the policy of ESOP, what happens? The management first need to understand what would be the cost effect on the company, what would be the dilution in the shares of the company, shareholding of the company. And after analyzing all these factors only, then the ESOP plan is formulated. So first of all, management wants to understand कि अभी हमारे शेयर की क्या वैल्यू है, how much shares we should give as the right to subscribe. After understanding these factors कि कितनी कॉस्ट आएगी, करंट शेयरहोल्डर्स को कितना बेनिफिट है, एम्प्लॉयज को कितना बेनिफिट है, एम्प्लॉय कितने मोटिवेटेड होंगे इन सब ESOPs को लेने के बाद, then the company implements this policy. And after implementation, the shares are granted to those directors, officers, and employees of the company. Achha, with these ESOPs, we all know that there is a grant date and there is an exercise date. So what happens कि there is a difference between the grant date and vesting date. जब हमें ऑप्शंस ग्रांट किया जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास या डायरेक्टर के पास ऑप्शन आ गया उस दिन शेयर सब्सक्राइब करने का. सो द ऑप्शन वुड बी गिवन at the vesting date. And then what is vesting date? So vesting date is a date जहां पे हम बोलते हैं कि आप ग्रांट डेट से वेस्टिंग डेट का पीरियड हमें सर्व करो इन द कंपनी, and then only we will give you the right. So basically we are on the grant date, we are intimating the employee that if you serve with us till the vesting date, we will offer you a right, we will give you an option to subscribe to this number of shares at the exercise price which is already being defined at the time of grant. तो ग्रांट के टाइम पे हमें पता होगा कि कंपनी किस प्राइस पे शेयर देने को तैयार है. इन दैट केस जब वेस्टिंग डेट कंप्लीट हो जाती है, देन ओनली, जब वेस्टिंग डेट कंप्लीट हो गई है तभी डायरेक्टर के पास, एम्प्लॉय के पास राइट आया है कि वो कंपनी के पास जा सके और अपने राइट को एक्सरसाइज कर सके. इफ वेस्टिंग डेट से पहले एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है,
देन उस केस में क्या होगा, अगर वेस्टिंग डेट से पहले एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, एम्प्लॉय छोड़ के चले जाता है, देन दैट ऑप्शन जो हमने उस टाइम पे उसको ग्रांट किया था वो लैप्स हो जाएगा, उस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है. And if after the vesting date, employee wants to exercise the price, then employee would also require कि उस particular date पे when the employee wants to exercise the option, उस particular date पे company के shares की actual value क्या है. After analyzing those decisions only, कि अभी अगर मैं 100 रुपए का एक्सरसाइज करता हूँ and the fair value of the company is fair value of the per share of the company is 150 or 140, then only the employee would be willing to exercise that option. If the option is out of money, that means कि fair value of the share is 80 rupees and the option can be exercised at 100, then no employee would be willing to convert his option into exercise into the shares. So उस cases में हमें throughout the period of ESOPs हमें ये हमारे माइंड में रखना होता है कि क्या वैल्यूएशन है ईसॉप की, क्या वैल्यू है फिर हमारे इक्विटी शेयर की, व्हाट इज द बेनिफिट दैट वुड बी डिराइव्ड टू द एम्प्लॉय, व्हाट वुड बी द कॉस्ट दैट वुड बी डिराइव्ड टू द कंपनी. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, पीतम सर वुड टेक फॉरवर्ड फ्रॉम दिस. सो अगर हम बात करें ईसॉप्स की, ईसॉप्स के अंदर 3 एंगल्स है. पहला एंगल है एट द टाइम ऑफ ग्रांट. जब ग्रांट करते हैं ईसॉप्स को, दीज आर द एक्सपेंस फॉर द कंपनी, जो कंपनी को अमोर्टाइज करने हैं, रिकॉग्नाइज करने हैं ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड. सो जो ग्रांट के समय रिक्वायरमेंट होती है वैल्यूएशन की, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जब ये ईसॉप्स वेस्ट होते हैं और वेस्ट होने के बाद जब ग्रांट, जब होल्डर इसको एक्सरसाइज करते हैं, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट कि जो भी एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला है बिकॉज ऑफ दीज ईसॉप्स, दीज आर कैटेगराइज्ड एज द परक्विजिट्स इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयज. सो उस केस में वी नीड टू हैव अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, and that is something which we need to get from the merchant banker only. Only merchant banker is authorized for the purpose of perquisites valuation under income tax act at the time of exercise of the option. अब बात करें थर्ड एंगल, दैट इज द modifications of ESOPs. अगर कोई भी केस के अंदर ESOPs gets modified, ESOP schemes gets modified, that is also categorized as a case for the purpose of valuation, and the difference between the value जो हम पहले amortize कर रहे थे and the difference जो उस modified date पे there is an additional advantage given to the employees will be treated as the expense and has to be amortized in future course और further जो remaining period रह गया है. ESOPs की वैल्यूएशन की बात करें, सो ESOPs की वैल्यूएशन इज एन ऑप्शन, इट इज एक्चुअली एन ऑप्शन टू एन एम्प्लॉइज. सो ऑप्शन की वैल्यूएशन की बात करें, सो देयर आर 2 मॉडल्स, Black-Scholes मॉडल्स एंड बाइनोमियल मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ विच the valuations of the ESOPs are carried out, and on the basis of these valuations the amount has to be amortized as per Companies Act, which auditor certifies, and on the basis of the valuation of shares, not ESOPs. जो value of shares आएगी at the date of exercise is the valuation on the basis of which tax has to be paid by the company, or tax has to be deducted by the company under the head perquisites from salary. Ankit, next case. So the next case study is regarding the valuation of sweat equity shares. So first of all, we need to understand what are sweat equity shares. So sweat equity shares are more or less similar to ESOPs with one main difference. In ESOPs, what happens, there is a grant date on which the option is granted to the employee, which can be exercised only after the vesting date. However, in sweat equity shares, what happens, the company issues that option to the employee as on that date only. That means the employee need not wait for vesting date or need not wait for a particular period of time to exercise that option. So the company at an upfront give the employee an option कि आप आज ही हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो at a particular discount.
So for example, in this case, what would happen? A company which is listed on a market, जिसका share price 150 का है, can ask it director कि हम आप you are a prestigious employee for our company, you are doing very well, and we want to give you some benefits. So what you can do, you can subscribe to our shares at a discounted price of rupees 100, where the market value of the share is rupees 150. So this is the major difference between ESOP and sweat equity. So in sweat equity shares, what happens? If the company is a listed company, then SEBI guidelines would apply. And in that case, the value of sweat equity share would be the higher of the average weekly high price and average of weekly low price for the past 6 months, or average of the weekly high price or weekly low price during the past 2 weeks. That means we need to calculate the average weekly high and weekly low for last 6 months, and average weekly high and weekly low for last 2 weeks. In both the cases, which average is higher should be considered as the value of that sweat equity share for the purpose of SEBI. And in case of unlisted companies, what happens? The price of sweat equity shares to be issued to the employees and directors shall be the fair value price calculated by an independent valuer. That means, in the case of unlisted company, no specific methodology or formula is prescribed for identifying the value of sweat equity shares. And for the purpose of this valuation, we should also note when the sweat equity shares are issued for any consideration other than cash, the value of consideration should be the value of intellectual property or know-how provided or other value addition. So for example, if we say कि directors को you can subscribe to our shares without any cash price, तो उस case में the value of sweat equity shares would be the actual benefit which is brought to the company. So when we are issuing shares to the director, we need to understand कि उस independent director से, उस particular person से, उस particular employee से क्या value addition हो रही है हमारी company में, whether it is an actual know-how, whether it is a technical know-how, whether it is a experience we are taking on board to our company, and that experience should be valued to identify the value of our sweat equity share. In this case, one of the most used methodology is with and without method. So in that case, what happens? Two valuations would be prepared. Two DCA valuation would be prepared, that is discounted cash flow valuations would be prepared for a particular period of time. One where we would consider that employee is with us and he will and all the benefits of those employee would accrue to our company. And the other one would be the valuation where we are assuming that the employee is not with us, and what would be the case if the employee does not work with us. So in these cases, the value which is derived with employee and the value which is derived without employee, the difference between these two valuation would be the value of the actual addition brought to the company, and this is the value of the sweat equity shares. So we already discussed the difference between ESOPs and sweat equity shares. So here are the points which are just given out to identify the basic difference between ESOP and sweat equity share. For example, in ESOPs are given in the nature of incentive and retention plan, where we want कि हमारा employee एक particular period तक हमारे साथ काम करे. So that is why there is a grant date and there is a vesting date. However, in sweat equity shares are given as a benefit to the employee for bringing on board any value addition to the company, any new particular thing to the company. Similarly, issue price, when we talk about the issue price of ESOPs and sweat equity shares, in ESOPs, the options can be issued without conversion right at a predetermined price. With conversion price at a predetermined price. That means कि option जब आप grant कर रहे हो तो आपको एक particular predetermined price पता होना चाहिए, जिस particular price के ऊपर employee अपने option को exercise करेगा. However, in sweat equity shares, what happens? There is no predetermined price. The transaction is taking upfront. The transaction is being undertaken upfront. तो उसी time पे company would sell. Similarly, in ESOPs, I already told you there is a lock-in period. That means the employee has to wait from the grant date till the vesting date in order to be eligible to exercise the option. However, in sweat equity shares, there is no particular timeline. There is no compulsory lock-in period. There are no pricing guidelines given for ESOPs. However, we already saw that in case of SEBI listed companies, there is a particular pricing guideline prescribed where
The value of sweat equity share would be determined by identifying the weekly high low for last 6 months or weekly high low for last 2 weeks. And similarly, there is no requirement to maintain a separate register. In case of ESOPs, however, there is a separate register required to be maintained for all the shares which are issued as a sweat equity shares. So these are the basic broad differences between ESOPs and sweat equity shares. Now, coming to the last case study, I will just take a minute for the last case study. So the last case study pertains to the impairment of assets. So there are two Ind AS. Ind AS 109 deals with impairment study for the financial assets and liabilities, and Ind AS 36 deals with non-financial assets. It also deals with goodwill. So now the thing is that अगर हमारा कोई ऐसा क्लाइंट है जो Ind AS compliant क्लाइंट है, जिसके ऊपर Ind AS एप्लीकेबल है, there is a requirement to check the impairment testing. For Ind AS 109, the impairment testing has to be done every 3 years or on the basis के हमारे पास कोई ऐसे factors हैं जिसकी वजह से there is a requirement for testing impairment. कोई ऐसे parameters हुए हैं जिसकी वजह से हमें impairment testing करनी है. और Ind AS 36 की बात करें, so उसके अंदर अगर हम बात करें गुडविल की या इंटेंजिबल्स की, these has to be tested each and every year. Intangibles and goodwill as per Ind AS 36 has to be tested each and every year, and this is where the role of a registered valuer or a valuer comes into the picture for the purpose of valuing these goodwill, whether the goodwill carries the true value in the books of accounts or not. और impairment की अगर हम बात करें, impairment testing is something जो हमें कैलकुलेट करना है recoverable amount as a CGU, cash generating unit, or recoverable amount is actually a higher amount of the value in use, which is determined through DCF methodology, or the liquidation value, that is the sale value minus cost to sell, whichever is higher. Agar recoverable value is more than the carrying value of assets, there is no impairment. Agar recoverable value is less than the carrying amount of the asset, then there is a case of impairment. So this is whole what we talk about with regard to valuation. And as far as our experience in this valuation field is concerned, there are tremendous opportunities for the chartered accountants in coming years, as government is also pressurizing for the draft bill 2020 and also other legislation which will regularize the role of a valuer in the industry, and this will bring in more opportunities when we talk about. As there are lots and lots of startups coming into India, the valuation requirements is increasing multiple folds. So this is whole together, sir, Piyush sir. So we again like to thank the Jalandhar branch of ICI for giving up this opportunity to share our thoughts with regard to valuation, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thanks to both the speakers. You have given a holistic picture about valuation and explained in a very practical manner. It was a wonderful and knowledgeable session. Both of the speakers has covered all the applicables law relating to valuation with examples, and it was really very interesting. I'm sure in future, whenever there will be any case related to slump sale, valuation, ESOP, or other cases that has been taken by you, members will open our YouTube channel and check this webinar video, because some of the cases we were already handling, but there are many fields which we may face in future. So thank you so much. It's a really important opportunity for CAs in this valuation. So thank you so much for guiding us. Thank you, sir. Thank you Thanks very to much. all the members. Yes, Piyush sir. And some members are asking for presentation, sir. Yes, Please sir. share presentation with me so that we may circulate it to the members. Sure, sir. Sure, sir. Thank you, sir. It's really very interesting and learning experience to have you in our Jalandhar branch, sir. Thank you very much. Most welcome. Thank you, sir. Thank you, Pitam ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Thank you, dear members, for your valuable time also. Thank you, ji.